Hello Rishikesh, once again, welcome back. And first of all, I would like to ask you that how was your experience regarding the spoken English class, and did you like the classes? How was your experience basically, right? So tell me, Rishikesh, how was your experience basically regarding the spoken English class? Are you feeling confident now? And like initially, how are you? What was your confidence level, right? And So, do this confidence level has been improved or not? I just want to take some feedback from you, sir, Rishikesh, yeah, regarding our sir, class. sir, first of all, thank you to inviting me in your YouTube channel, sir. And I am good, sir. Good morning, sir. So I am very well confident. Earlier, I was not confident, and earlier I was not uses of taking a grammar, and I was not taking it confidently. Earlier, I was go to a interview locations, and I have not clearing the GD topics, and I don't know how to speak the in GD topics, how to taught the towards in the front of interviewer, right, sir? Yeah. So now I have learned in your coaching classes uh, how to taught in how to taught in confidently in the front of interviewer. So first of all, thank you, sir, so to giving Okay, me Rishikesh, very good, na, your very good. in this opportunity. Initially, like when we had a conversation, when you were giving for when you were going for you for the interview and all, that time you were facing problem, right? But you were saying Right, that sir. now after taking classes, like you are feeling quite confident, and you are quite, Yeah, 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 you are sir. I like, am, yeah, sir. I am Sir, I am till now. I have a 110% confident. I am nice, clear the GD rounds and all the rounds in interviews, fantastic, ground staff fantastic. interviews. Earlier, I was not aware that how the uses of grammar in GDs. Right. Yeah, I am yeah, yeah, very earlier. I have a lot of mistakes in grammar, yeah, but yeah. till now I have improved 90%. Okay. So Rishikesh, like, did you like the grammar classes? Whatever I taught you, 5 days you learned grammar, right, in my class. So how was your experience Yeah, about the yeah. grammar? Yeah. Starting first week you have taught in grammar, uh, Uses of and should, could, would was there. after that Should, could, would. you teach Various things were me. there. Yeah. After that, sir, you teach me how to clear the GD topics and secrets. You tell me secrets and crux. Yeah. I Yes, also yes, told you yes. about the sentence making technique. How was Right, that? Did you sir. liked it? Did you liked it? I think that was something new for you, right? About the sentence making Right, technique sir. which I taught you, right? And finally, you are confident enough to crack the ground stuff interview, right? It's fantastic, Right, Rishikesh. sir. Fantastic. And your performance was also just amazing because you were not even able to speak a single word. And finally, after 1 month, at least you are speaking. That is something which is, yes, which is an achievement for you and for me as Yes, well, sir. right? And apart from this, do you want to you like give us credit something like that, like to the team aviation life, like how was your experience and all? Yeah, sir. Yeah. Without aviation life, I cannot speak in earlier single word. If I stand in front of you and sitting in the via video call, so it's totally credits only aviation life, sir. Okay. Without aviation life, I cannot do anything, sir. Okay. Fantastic, Rishikesh. Fantastic. And anything else about the classes which you want to share, like any special thing, any Yeah, special, sir. yeah, yeah. Yeah, sir. I am, and I'm my friends and my family and friends. I'll refer your classes because your classes with if any candidate, any person there is in not we are spoken English is very must. You have to go any interview. If your spoken English is not good, then you not crack the any interview. Yeah. So first of all, you join the aviation life classes in spoken English or ground staff courses in anything. You firstly you join, then you work on it in your grammar, in your personality development, anything. So then you crack the interview. If you are not joining, then it's impossible to crack the interview. ऑब्वियसली ऋषिकेश एंड ऋषिकेश, चलो ये तो इंग्लिश में बात हो गई हमारी, और मैं ये बोल रहा था कि इसकी प्राइस रेस कैसी थी 2,999 में, मतलब फैसिलिटीज मतलब क्या क्या मिली आपको, आपको वर्थ इट लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है ये 2,999 का प्राइस जो है?
नहीं नहीं सर, बिल्कुल वर्थ इट है इसमें, मतलब दो सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इसमें आप वन ऑन वन मतलब जीडी टॉपिक्स कराते हो, और आप पहले बोलते हो कि हिंदी में भी बोलो अगर आपको नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, फिर बोलते बोलते जैसे हमें आपने बताया था कि हिंदी व्याकरण नहीं पता है किसी को भी, कि कर्ता डोंट क्या होता है, डोंट रिवील कारक द क्या होता है, क्रैक्स, आपने जैसा। डोंट रिवील द क्रैक्स। नहीं नहीं, एक हाँ जस्ट हाँ, मैं बता ओके रहा हूँ ओके, सर, क्रैक्स नहीं बता रहा हूँ, या कि मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आपको ग्रामर में उलझने की जरूरत है। आपने ये बताया था सर कि या हमें ग्रामर में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आता है बोलने। तो वैसे ही है, अगर आपकी क्लासेस जो भी ज्वाइन करेगा तो आप उसे सिखाएंगे सर, कि मतलब ऑब्वियसली, किस तरीके से, किस वे में हमें मतलब या बोलना है, कैसे बोलना है, अंदर का जो डर है वो कैसे भगाना है। वो सारी चीजें सर आप ज्वाइन करेंगे तभी मतलब पता और चलेगी सर। ट्रांसलेशन जो मैंने बताया था आपको, ट्रांसलेट कर करके एक एक सेंटेंस यस, को जो मैं वही बताता चीज हूँ, मैंने उस बताया उसका ना क्या सर। फीडबैक है? तो हाँ, इंग्लिश में भी मैंने यही चीज बोली थी, एंड हिंदी में अगेन वही बोल रहा हूँ। फर्स्ट वीक तो आपने सर हमें यही सिखाया कि ट्रांसले ग्रामर क्या होता है, देन आप आपने सिखाया सर कि ट्रांसलेशन, एक सिंगल सिंगल वर्ड हिंदी टू इंग्लिश, देन इंग्लिश टू हिंदी, देन उसके बाद आप जीडी टॉपिक्स पे आए, और आप पर्सनल भले ही 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग जितने भी हमारे बैच में हैं सर, तो आप सब पे ध्यान बराबर देते हैं सर। ऐसा नहीं है कि उस पे ज्यादा ध्यान है और इस पे ज्यादा नहीं है, उस पे ज्यादा, सब पर आप प्रॉपर ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है, कहाँ उसकी कहाँ गलतियां हो रही हैं, आप गलतियां भी बताते हैं सर। और आप सबसे मुझे एक अच्छी चीज ये लगती है कि आप डेली असाइनमेंट्स देते हैं, या एक एक पर्सनली टॉपिक पे सर। तो वो एक अच्छा है, अगर जो बच्चा कर रहा है सर, तो आपको सामने खुद ही दिख रहा है सर। आगे मैं यही नहीं एग्जैक्टली, मालूम होता था, मेरे पास कंटेंट नहीं होता था दिमाग में सर। एग्जैक्टली। तो लेकिन अभी मेरे पास काफी इंप्रूवमेंट, अभी मैं डैम श्योर हूँ सर। अभी मैं इंटरव्यू तो निकाल ही लूंगा सर, मतलब इतना तो है सर निकल जाएगा ना आपका मेरे इंटरव्यू, अंदर अभी हैदराबाद का कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी ऋषिकेश की तरह इंग्लिश सीखने आ सकते हैं। और ये सिर्फ आपको, लाइक हमारा जो स्पोकन इंग्लिश क्लैश क्रैश कोर्स है, ये सिर्फ आपको 2,999 में दोस्तों मिल जाएगा। इसमें बेसिकली मैं आपको जीडी करना सिखाऊंगा, एक्सटेम्पोर करना सिखाऊंगा, आपको बेसिक ग्रामर सिखाऊंगा, एंड एटसेट्रा। बेसिकली आपको मैं फुल फ्लेज, लाइक आपको मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा आपके लिए कि आप इंग्लिश में बोलोगे जैसे ऋषिकेश बोल रहा है अभी आपके आगे। ऋषिकेश वॉज ऑल्सो फेसिंग ट्रबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, बट एज यू कैन सी टुडे ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और बस ये है दोस्तों। सो डू जॉइन माई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस if you want to become like Rishikesh, and if you also want to crack the ground stuff and want to crack the cabin to interview. चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।